लाडबाग कराचा बोलतो विजय असो। इतना एक्सक्लूड करके चलते हैं कि तो कुछ हमसे बहुत अलग लोग हैं। एक क्रोमोसोम इधर से उधर होता ना, आप और हम भी ऐसे ही होते, गुड फॉर नथिंग। I got very emotional the first time, so everybody, I was overwhelmed. When Prasanna said action, they didn't care any camera, lights, nothing. So how did you train Karim especially, for throwing in that unique style of the reverse way? They are better at carrying clothes than some of the regular actors. They have a swag which is unmatched. पता है तुम्हें इस सीन से क्या होगा, इस सीन का क्या मतलब है? क्या सब बच्चों ने हाथ उठाया, मैंने क्या होगा? तेरा ऑस्कर मिलेगा। I wasn't feeling too well, so I just held his hand. I was on that mattress. I think कोई और होता तो वो इतनी बड़ी फिल्म करने के बाद में they were like पता नहीं कहीं कौन से आसमान पे होंगे। सारे इतने कमाल के एक्टर्स हैं। This was perhaps the most well prepared bunch of actors we have ever worked with. As a bonus, मैंने अपने आप को PlayStation 5 गिफ्ट किया था। They are your responsibility. Okay. Then I became their responsibility. You used to do दादागिरी लड़के के ऊपर करती थी। सब लोग लाइन में खड़े रहो, चलो नाटक बंद करो। After this, we will never be doing this mistake, or we will never assume that they will not be able to do a certain kind of role. You do a lot for stray dogs. I understood that stray dogs also needs importance. They need love. इतनी प्योर सोल्स एक साथ होती हैं, so you don't realize how to deal with it. हम सब थोड़ी सी मैनिपुलेशन, थोड़ी सी कनिंग साथ लेकर ही आते हैं। From start till end, आपको हेलमेट पहना हुआ देखा है। सड़क में जो श्वान घूमते रहते हैं उनसे मैं बहुत डरता हूँ रियल लाइफ में। What is that uniqueness with this ability moment? Deserving stars that they were, be looking like stars is what for me, to be honest, was the best moment. Sharma ji's gesture to me of every day coming and either pranam करेगा दादाजी, how are you uncle, and immediately side में ये है like how are you beautiful. Oh. पहले से बेहतर इंसान बने हैं हम सब इस फिल्म का पार्ट होने के बाद। If Gulab wants to go to the moon, what will you say? Gulab wants to go to the moon. Gulab Jamun. Welcome to the new episode of Uniqueness with this ability, because empathy matters. This episode is sponsored by Karan Saldana. Today we have a bunch of special people joining in from the team of Sitare Zameen Par. Let's welcome the whole team on our show. So let's start with some small beginning. Like, how was your first day with them? First day I was very scared of meeting them. Not scared, but I didn't know anything about them कि क्या है कैसा नहीं है. But जैसे पहली बार मिला और वो लोग they were there with the open heart कि they accepted me. I knew like I'm gonna start a film with them. It's been really long journey with them. I still remember the day one and there's no last day. The journey still continue with them. So they are there thinking, who's he as a coach and what is he going to do with me? And we are thinking on the other side, how are they going to accept us as coaches? Because if they like you, they love you. But if they don't like you, they may not accept you the way you expect them to accept you. Sure. So that becomes a little tricky. They understand it so beautifully. Like, we give them so much less credit on sometimes subconsciously or unconsciously, but they understand it so well. In fact, sometimes they understand it better than some of the regular actors. So-called common. Regular actors, if you can call it. Yeah, sure. मुझे तो कोई जानकारी नहीं थी। जहाँ गुलशन था फिल्म के शुरू में, वहीं पर मैं और शायद यूनिट के कुछ और लोग भी होंगे जो वहाँ पर थे। तो फिल्म लिखते हुए वो जर्नी मेरी हो रही थी, फिल्म बनाते हुए भी हम सब के यूनिट में किसी से भी बात करेंगे। सो वी ऑल हैव गॉन थ्रू द जर्नी ऑलमोस्ट मोर और लाइक कि जैसा गुलशन था शुरू में, क्योंकि हमने वक्त नहीं बिताया होता, नहीं समझा होता क्या हो रहा है, तो थोड़ी सी इसकी साइंस भी जो होती है। अब क्योंकि हम इतना एक्सक्लूड करके चलते हैं कि तो कुछ हमसे बहुत अलग लोग हैं, पर ये बताना कि सिर्फ इट्स जस्ट एक्सीडेंट, एक मिरेकल ऑफ डेस्टिनी है। यानी एक क्रोमोसोम इधर से उधर होता ना, आप और हम भी ऐसे ही होते, गुड फॉर नथिंग। तो इतना सा फर्क है, सिर्फ इतना सा, जिसे हम पता नहीं अपने मन में वी कंस्ट्रू इट टू बी वे बिगर देन इट एक्चुअली इज।
Actually goosebumps आता है यार. Prasanna told me the story in one night. In that meeting only, I cried because it was so emotional. It was like very heart touching subject. So I thought कि यार life में ऐसा project I don't think so कि वापस कभी आएगा. So I just wanted to do this film. Everyone was there. We saw them for the first time, and you either read it on internet or you see it in other film. You always see a perception of what Down syndrome is, but we actually saw the entire team of Satare who was with their parents, and that is when it touched our heart. That it made us realize the kind of privilege that we have on our everyday basis, and the importance of making this film and the importance of this film that it should reach the entire world. And the importance of knowing that what it is to give Sitare the platform that they have been given. जो बात कर रहे थे ना वो लोग, वो इतना क्लियर और इतना they had no inhibitions about talking to anybody. हम सोच समझ के बात करेंगे. अगर बात करने जाएंगे, अगर आपको आमिर सर मिल रहे हैं तो we will think how to speak to take, but they had no because they were clean. और सर मेरी गर्लफ्रेंड को लाल पसंद है. वो prostitute है. सर ने ये वेरे बोलने को मना किया है. हाँ, सर ने ये शब्द बोलने को मना किया है. वो बिजनेस करती है, बिल्कुल सर की वाइफ की तरह. करेक्ट सर? They were not there to impress anyone. They were not there to get brownie points from anyone. They were just there because they saw an opportunity for. They may not. I don't know whether they must have realized what an opportunity it is, but that is what made the whole process of doing this film very special. And that energy, I think the first time when you met them, Something that special. energy I what think they she carry. started crying after seeing what all they were doing. Oh. I got very very emotional the first time I saw everybody. I was overwhelmed. जब भी मैं सितारे ज़मीन पर बात करता हूँ तो मुझे बड़ा एक ना रिलीफ सुकून सा मिलता है. जनरली वर्कशॉप के अंदर क्या होता है कि आप रास्ता बनाकर जाते हो कि मैं इस रास्ते एक्टर को लेकर जाऊंगा, लेकिन यहाँ उल्टा था कि इन्होंने मुझे रास्ता दिखाया कि अगर आपको हमसे बात करनी है या हमारे पास आना है तो इस रास्ते से आइए. तो हर किसी का रास्ता ढूंढते ढूंढते हम काम करना शुरू किया. तो आपने कुछ एक्स्ट्रा प्रिपरेशन या कुछ एक्स्ट्रा वर्कशॉप्स इससे पहले अटेंड किए थे इनको सिखाने के लिए? एक्चुअली नहीं करी मैंने. प्रसन्ना सर के साथ मैंने एक फिल्म करी थी शुभमंगल सावधान एज एन एक्टर, और मैं बहुत सारी वर्कशॉप बच्चों के साथ और पहले बहुत चीज़ें करता रहता था एक्टर्स के साथ, स्पेशली बच्चों के साथ में. तो वो जानते थे कि मैं वर्कशॉप करता हूँ. तो एक दिन उन्होंने मुझे उनसे मिलने के लिए बुलाया और मैं उनके साथ कुछ गेम्स खेले, कुछ चीज़ें करी, और वहाँ पर प्रसन्ना सर ने कहा कि तुम इनके साथ वर्कशॉप क्यों नहीं करते. तो फिर मैंने उनके साथ वर्कशॉप करनी स्टार्ट करी. स्पेशली इन बच्चों ने मुझे कॉन्फिडेंस दिया कि किस रास्ते से आप हमारे साथ मिल सकते हो. स्टार्टिंग की वर्कशॉप में एक्टिंग से ज़्यादा एक दूसरे को जानना था. इन सब कैरेक्टर को एक दूसरे को जानना था. ये अलग अलग बैकग्राउंड से आ रहे हैं, अलग अलग शहरों से आ रहे हैं, तो इन सबका जानना और मुझे इनका जानना और इनका मेरे ऊपर कॉन्फिडेंस आना कि ये हमारे साथ है. मी वर्कशॉप करायची मी प्रसन्न सर आणि तो बाबा आहे ना त्यांच्या बरोबर मी वर्कशॉप करायची. मी किक करते. ओके. त्या पेट्रोलला मी किक करते आणि त्याला लागलं नाही पाहिजे. याची तू प्रॅक्टिस केलीस? मेरे पिताजी अक्सर बोलते हैं कि एक लाइफ में तुमको मल्टीटास्किंग करनी ही चाहिए. जिंदगी में ऐसा दौर आएगा जिसमें आपको मतलब 3-4 उससे ज़्यादा चीज़ें आपको करनी पड़ती एक साथ. When Prasanna said action, they didn't care any camera, lights, nothing. एक बार भी उन लोग कैमरा में लुक नहीं दिया. Day first test shoot day. So I was like crying. After that I called my entire team. I'm going to do this film. त्याला आवड आहे म्हणून तो लवकर पाठ करतो. असंच चित्रपटाचे डायलॉग संवाद हे ना लवकर पाठ होतात कारण आवड आहे त्याची. मिमिक्री, ॲक्टिंग हे सगळं फार मनापासून आवडतं त्याला. म्हणजे गणित सोडून सगळं तुम्ही काही विचारा त्याला तर प्रत्येक तो उत्तर देईलच. गणिताचं काही एक विचारूच नका तुम्ही. काही विचारायचं नहीं गणिताबद्दल. मैं हर दिन उनके साथ में जाता था एकदम खुले दिमाग से, खुले दिल से, और उनके साथ में सीखता था. I was training with them only, like it was my training rather than their training. I think we trained around 90 odd kids
Oh. besides the Sitare? Fortunately for us, we had in workshops which Prasanna sir arranged with the help of American Productions. There were qualified people who came and discussed things on the basic of the do's and the don'ts, on how to interact with them, what are the things that you should do, what are the things that you should avoid. There was one person who had this, anything that itched. And even the label of the t-shirt would itch him. So when you got to know that we removed all the labels, so that it was those kind of details that you have to take care of. So it was actually a very big treat watching your costumes in the film. Costume speaks as a character. Gulshan wearing pants and sports shoes, Karim's shorts, those typical shorts, Sharmaji's suspenders, Sunil's helmet. So these were also characters in your films. For Gulshan, it was very clear. He's a Delhi-based guy who's basically a sports. He's not really he's not a fashionable guy. He's not. So he is more into what he thinks is comfortable and what he thinks is right, but it's not. Sunil's helmet was again part of the character. So it was a very organic process. It wasn't something that we thought and translated. Because he's a hypochondriac and he worries about things. So the helmet in itself becomes an organic part of his behavior or his thought process. So it was a reflection of that. इसका क्या है कि इतना डेडिकेटेड बच्चा है कि कितना भी हार्ड वर्क करे, कितना भी टाइम उसमें ले, उसका कोई कंप्लेन नहीं है. बहुत पेशेंटली करता है वो सब, क्योंकि जब परफेक्ट हो तभी हम लोग ओके बोले तभी रुकता है, नहीं तो एक और बार बोले तो बिना कोई कंप्लेंट के करेगा. तो इसने एंजॉय करके एक्ट किया है. First time they are facing the camera, but we never had any problem. If you ask for rating, they'll give you more options. Okay sir, we'll do this. Okay sir, we'll do that. काफ़ी एनर्जी था उनका. हम लोग को भी उतना एनर्जी आता नहीं है, बट उनको देख के हम लोग को एनर्जी आता था सीरियसली. सो अभी नॉर्मल लाइफ में थोड़ा सा शूट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया. जो गुलशन की जर्नी है, आमिर सर की जर्नी है सितारे ज़मीन पर, वो मेरी रियल लाइफ जर्नी मैं बोलूँगा. एक डॉक्टर से हमें मिलवाया गया था कि क्या डाउन सिंड्रोम क्या होता है और किस तरह से चीज़ें उनको ट्रिगर करती हैं, किसका क्या होता है. किसी को सोशल एंग्जाइटी होती है, किसी को नहीं होती है, कोई ज़्यादा क्लोज होता है और कोई नहीं होता है. वो सारी चीज़ें हमें बताई गई थी एक वर्कशॉप के थ्रू पूरे क्रू को, ताकि सब समझ सकें कि किस तरह से चीज़ें होंगी. The first thing that came in our mind after researching was the colors, because their temperament is directly related to the colors that are there around. That's what we understood of whatever we read. The environment that you create for them. So the colors that you see in the film are the colors which these kids will be comfortable. Fortunately, the colors that are given are all happy colors. Guddu has this animal chatter where his description and his character was discussed so nicely that it helped us creating their personal spaces as well. Since we had met Guddu personally, we always imagined Guddu as this, seen him as a cheerful person, and he was like that in the film also. So that really helped. Gulshan's mom says, किसी को बाहर वाला समझता क्यों है? कोई बाहर वाला नहीं होता पुत्र, सब अपने होते हैं. So is that inclusion message which you wanted to give it to society through this dialogue? हम सिर्फ ये चाहते थे कि गुलशन का कैरेक्टर ट्रेट ये समझ आए ऑडियंस को कि इस आदमी के मन में इमोशनल आइडेंटिफिकेशन या एम्पैथी थोड़ी कम है. ये जो इससे अलग होते हैं उनका मजाक बनाता है, और उसकी माँ इज़ एट द अदर एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम. वो गुलशन का मॉरल कंपस है, जो हमने अभी तक सितारे आए भी नहीं है फिल्म में, लेकिन वो पहले ही बता रही है कि किसी को बाहर वाला क्यों समझना है. तो हमें समझ आए वो मॉरल कंपस है जिसे वो इस्तेमाल नहीं कर रहा है भले ही, बट ही हैज अ मॉरल कंपस. Right, as you know, mothers are always the first Absolutely. teachers. But they've been great. We love training kids by itself. So we've been doing it for a really, really long time. Been training for more than 20 years. And basketball, after playing it at a higher level in India. See, they were already confident. Already they are like very charming and all. So best thing is they are still same. They were the nice human beings. They were the good people. They are still the same. उनको फर्क भी नहीं पड़ता इन सब चीज़ों का. Obviously they are enjoying their limelight and all this thing. But वो लोग है ना अपने साथ में लेके नहीं घूम रहे. ऋषि का एक बहुत अच्छी चीज़ है. फिल्म आ गई है वो ऋषि योर फिल्म. I know यार. That's it. Doesn't matter. सिमरन जो जैसी है गोलू जिसने किया है. सिमरन is always been diva. Like मेरे सामने तो हमेशा ही diva रही है वो. हम जीतने के लिए आए हैं, बेइज्जती करने के लिए नहीं. Come on boy. तो वो पहले भी ऐसी थी, अभी भी ऐसी है.
फिल्म हुई है, चली गई है, होने के बाद में सब हो गया, लोग मिले, हाँ हाँ ठीक है, लोग आएंगे बोला हमने आपकी फिल्म देखी, हाँ थैंक यू, बस इतना है, नहीं चढ़ा। लेकिन आई थिंक कोई और होता तो वो इतनी बड़ी फिल्म करने के बाद में दे वर लाइक पता नहीं कहीं कौन से आसमान पे होंगे। आई नो। बट इनके साथ में ये है कि हो गया ना, अभी ठीक है, अभी हमने काम कर लिया है, अभी हम वो तब तक ही था, वो लिव इन द मोमेंट वाली चीज है ना। राइट कुछ फनी मोमेंट्स आपको याद है? एक बहुत फनी था कि एज एन एक्टर ना हम लोग हर बार सीन का मतलब समझा रहे होते हैं कि इस सीन में क्या मतलब है, इस सीन के पीछे लाइंस ये लिखी हैं लेकिन इसका सब टेक्स्ट क्या है, कि क्या पूछना चाह रहा है, क्या कहना चाह रहा है। तो जब हम स्टार्टिंग मैंने जब नया नया करा, मैंने कहा पता है तुम्हें इस सीन से क्या होगा, इस सीन का क्या मतलब है। कहने सब बच्चों ने हाथ उठाया, मैंने कहा हाँ अरे वाह सबको पता है। तो सबने हाथ उठाया, मैंने क्या होगा, कह रहे ऑस्कर मिलेगा, ऑस्कर मिलेगा। मैंने कहा अरे यार, people call me Lotia Pathan. So what I don't understand. So then whenever I come to the gym nowadays also, they say Lotia Pathan आ रहा है, थोड़ा समझ के रखो, हाँ। And then one day I got new names, like बैंगन, one day टमाटर, अलग names they get every day on set. हर दिन उनके साथ में मुझको एक एनर्जी मेंटेन करके रखनी पड़ती है कि यू हैव टू बी हाई ऑन द एनर्जी, यू हैव टू गिव द राइट एनर्जी टू देम, तब भी उनसे अच्छी आएगी, बिकॉज दे आर वेरी सेंसिटिव ना। इफ आई एम सैड, मैं उनके चेहरे पे देख सकता हूँ कि ओके दे आर आल्सो नॉट लाइक दे आर कैचिंग माय एनर्जी। सो इफ आई एम एंटरिंग द वर्कशॉप के टाइम पे, जब मैं सुबह जा रहा होता था, व्हाटएवर हैपनिंग इन माय लाइफ डजंट मैटर, I have to be up. So मैं कूदता ऐसे करके, yeah guys, how are you? Tell us something, a very sweet moment which you shared with Amir sir. He is a very nice spiritual man. I wasn't feeling too well, so I just held his hand. I was on that mattress. You were lying down on the mattress. Yes, we both were lying on the mattress. And then Amir sir said, मुझे भी बहुत नींद आ रही थी, अच्छा हुआ इसने मैट्रेस लगा दी. That's the moment you're sharing about. Yes, I've seen that. सारे इतने कमाल के एक्टर्स हैं. This was perhaps the most well prepared bunch of actors we have ever worked with, जो एक डॉट टाइम पे रिपोर्ट करते हैं, सीन्स के साथ तैयार होते हैं. It was a pleasure working with them. और in fact we are lucky कि they gave us the opportunity to be a part of their journey. So how did you train Karim especially, for throwing in that unique style of the reverse way? Karim's a very unique character in the movie by itself. If you see it, you want to watch his character over and over and over again to understand what is this guy all about. At training, Karim was the sweetheart, of course. He wanted to do everything. But Karim's quite calculative otherwise. So he will count every basket that he makes. At training also. So he'll come back and say, sir, I've scored 6 baskets. And you're like, oh, great, Karim, let's do it again. And he's like, yes, I'm going to do it again. 2 rounds later, he comes, sir, I've scored the 7th one. I missed one. We're like, wow, great, Karim, let's do it again. Karim being Karim, as sweet as ever, he accepted it just the way it is and comes back to me and says, sir, do I have to score the basket or do I have to miss the basket? And I was like, Karim, you need to throw the ball up. Whether it goes in or it does not go in, immaterial. Just throw the ball up. Sir, what if it goes in? Like, Karim, if it goes in, fabulous shot. Everyone's going to applaud. Yeah, it was like we all had gone for dinner to one restaurant in BKC. After dinner, we came out and we were just talking. So over there, one Sikh family, they saw me, so they came out and said, "You acted in the movie." So I said yes. They just stood there, told me like, "Can I have a selfie with you?" I said yes. So they took a selfie and then they went in there and then they called their grandmom. Even their grandmom wanted just selfie with me. I feel like I'm among the cloud 9. They are all stars. Yes, Trust me, they are all stars. True. They are better at carrying clothes than some of the regular actors. They have a swag which is unmatched. They do. They really are. Because I've seen that in the interview with them, the way they're dressed up and, then they wanted to, should I wear this cap? No. Okay, I'm keeping this. And how is this jacket? Okay, and all that. So they're already stars. They are absolutely, and they are born stars. It's just we just presented them to the public. From start till end, आपको हेलमेट पहना हुआ देखा है, तो आप एक्चुअली में भी इतना ही खुद को सिक्योर रखते हो? हाँ, मैं सिक्योर रखता हूँ क्योंकि सड़क में जो श्वान घूमते रहते हैं उनसे मैं बहुत डरता हूँ रियल लाइफ में. उस गली में जाते ही नहीं मैं तो. Problem with me was that Prasanna sir, Srini sir, all of them made me the old person in the team, the senior. They used to call me senior. So everybody was actually looking at me as a senior, and her they used to call junior. So
So the conversation between the Sitares and her was different, and Sitares and me was different because they realized कि यार ये कोई सीनियर है तो कोई सीनियर नहीं, शायद सीरियस आदमी है, ओके शायद इसके साथ मजाक नहीं कर सकते. बाथटब के सीन में वो दिखता है कि ही इज रियली एंजॉयिंग, और स्पेशली शावर के नीचे भी जो एक छोटा सा सीन है वो गोपी के फेस पे ना वो दिखता है कि कितना एंजॉय करके वो कर रहे हैं. वाओ. If you see any politician in 1,000 people या कोई celebrity 1,000 लोगों के बीच में attention वो लेगा, right? These are like same. So you used to do some kind of दादागिरी? लड़के के ऊपर करती थी. अरे वाह. सब लोग लाइन में खड़े रहो, चलो नाटक बंद करो, ऐसे बोलती थी मैं. To all my friends, the whole Sitare, there was a BFX of a rat. The चूहा भागता है ना, we were all and it was like, oh my god. So one Dada used to give us towels and hair dryers to sit in the tank for like, it took us 5 days to shoot that whole scene. Really? Yeah, it took us 5 days to shoot that scene. Oh my god. So amazing sitting in the tank and back and going out again coming inside. It was like so good. Matlab pani, I would shake my head all the time. I was like, oh my god. Then we came out, then we changed again, then we are naughty, then we came back again. If Gulab wants to go to the moon, what will you say? Gulab wants to go to the moon. Gulab Jamun. So what is that point that you've learned from this team? There is no day कि हम लोग कुछ नहीं सीखा. Every day कुछ ना कुछ हम लोग को सीखना. ये किड्स का एक बहुत अच्छी बात है कि उनको लाइक कभी कभी हम लोग 10 घंटा 8-10 घंटा भी शूट कर रहे हैं. They never feel they are tired. Everything is a possibility. We know there are restrictions on the court when you are playing because there are rules. But to them, there are no rules. To them, It's I am open going ground. to play. Yeah. I don't know about the rule. I am just going to play. So their outlook towards this whole sport was very different. And they keep asking you questions repeatedly till they get a satisfactory answer. An answer which needs to settle down into them at their level. I think आपके अंदर एम्पैथी होनी चाहिए और पेशेंस होना चाहिए ताकि आप उन्हें समझ सको. एक बार आप उन्हें समझ गए और उन्हें जान गए और आप अपने आप को सरेंडर कर दिया उस चीज़, उसके साथ वही आपको सिखाएंगे. तो जैसे गुलशन के साथ हुआ कि वो सीखा लाइफ में, वही मैं भी सीखा हूँ. अब ये बोलना बड़ा अलग होगा कि मैंने सिखाया उन्हें. एक्चुअली उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया. प्रेजेंट मोमेंट में रहना ना कि हम क्या होता है कि फ्यूचर या पास्ट में बड़ा सोचते थे. आज मुझे अभी तो जाना है उधर, अच्छा कल मेरे साथ ये हो गया, अच्छा मुझे वो अभी हुआ. ये कुछ नहीं हो रहा, वो आपके साथ है. अभी जो है ये सीन चल रहा है, यही सच्चाई है, यही ट्रुथ है आज का. तो वो चीज़ जो प्रेजेंट में रहने का, ये भी बड़ा मज़ेदार एक तरह से आप ना मेडिटेशन. जब उनका वर्कशॉप हो रही थी तो ऐसा फील हो रहा था कि मेडिटेशन चल रही है मेरे लिए. हमारा डिसेबिलिटी शायद इधर है, उनका ग्रोथ इज जो भी है वो नेचुरल. मतलब जो डायलॉग है फिल्म में वो उड़ा देता है व्हेन इट सेज कि वो एक क्रोमोसोम इधर का उधर होगा तो हम भी वैसे ही होते. True. That's something which we never realize it, which we never understand. After this, we will never be doing this mistake, or we will never assume that they will not be able to do a certain kind of work. That's true. हाँ, मतलब अपने से थोड़ा शायद स्पीड में कम करेंगे. स्पीड कम हो सकता है certainly. बट वही है ना, मतलब सेंसिटिव तो बहुत लोग होते हैं. टू हैव द करेज टू मेक अ फिल्म आउट ऑफ दैट इज समथिंग व्हिच इज स्पेशल एंड वी वर लकी टू बी पार्ट ऑफ इट. वो जो हमारी फिल्म में एक है ना कि वो कोच जो आता है वो उनको सिखाने आता है, वो खुद सीख करके जाता है. तो आई थिंक वो मेरे साथ हो रहा था. हर दिन मैं उनसे नई नई चीजें सीख रहा था कि अच्छा शर्मा जी ऋषि से ये सीखने को मिल रहा है, आरुषि ये बता रहा है, आयुषी ये बता रहा है. एवरी डे वाज लर्निंग डे फॉर मी, क्योंकि हर दिन सरप्राइजिंग होता था बिकॉज दे डोंट कम विद सम काइंड ऑफ एजेंडाज एंड ऑल ना. जो हो रहा है वहीं पे हो रहा है. जो मतलब लिव इन द मोमेंट जो बोला जाता है ना, वो एक्चुअली में वैसे रहता है. तो आई लर्न फर्स्ट थिंग पेशेंस, लिव इन द मोमेंट एंड जस्ट चिल, गिव द लव. जितना प्यार दोगे उतना ही वापस मिलता है. Golu says in her birth journey that लड़ाई खत्म करना इतना आसान नहीं होता है. होता है, वो तुम लोग को खत्म करना ही नहीं आता. क्या कर रही हो? सॉरी, क्या सॉरी? ऐसा खत्म होता है. सॉरी बोलकर खत्म होता है. which we adults most of the times are least बिल्कुल नहीं bothered, करते. not Yes. aware of the thing. So this gives a strong message to society कि एक sorry बोलो
और बहुत सारी लड़ाइयाँ स्टॉप हो जाती है. सो इज देयर एनीथिंग दैट यू लर्न फ्रॉम दिस सितारे? बहुत सारी बातें मैं आपको बताता रहा हूँ. बिल्कुल जो गुलशन की हालत थी वैसे ही हम तो रोज जब सेट पर होते थे, आप सेट पे पहुंचोगे आपकी आंख भर आएगी एंड यू वोंट बी एबल टू पिन पॉइंट कि ऐसा क्यों हो रहा है. और बहुत बाद में यू रियलाइज कि हमें इतनी प्योरिटी की आदत नहीं रही. इतनी प्योर सोल्स एक साथ होती हैं तो यू डोंट रियलाइज हाउ टू डील विद इट. हम सब थोड़ी सी मैनिपुलेशन, थोड़ी सी कनिंग साथ लेकर ही आते हैं. तो वहाँ पर इतने सारे मासूम लोगों का एक साथ होना, इट वाज जस्ट सो ओवरवेलमिंग टू बी इन देयर प्रेजेंस. और उसके साथ में ऑफ कोर्स इट ट्रांसफॉर्म्ड ऑल ऑफ अस. हमारे तो बहुत छोटे करियर्स हैं. आमिर सर खुद बताते हैं कई बार कि सबसे उनकी ज़िंदगी के जो कमाल के तजुर्बे रहे उनमें से एक है. My hobby is like to dance. When I learned Mitterbai College and when I got second prize, and then I learned folk dance with Mansi Miss. You are a trained Kathak dancer. I have given exams in Kathak. I passed distinction in 3 exams. I'm in Kathak since 2019. I choreographed my own dance for a Bollywood song called Mohe Rangalal, where I showed all 3 aspects of Kathak, like Chhed-Chhad, Khubsurati, Nazakat and Nritya, which is my pure dance. I have 2 gurus, Pachi Didi and Seema Didi. You do a lot for stray dogs, Yes. right? Since 16 years of my life, I have been taking care of stray dogs. Feed them a business biscuit because I'm a vegetarian. I don't touch chicken or meat, anything. I understood that stray dogs also needs importance. They need love. People not there to give them that much, not love, so much of importance. Yeah, I thought, okay, chalo, let me do this. So then I treat them as my kids. Then they're only children. Why I have? No, I don't need any of my kids. I take care of their behavior issues, behavior medical issues. I am the one taking care. Because they know that you love them so much. Yeah, and our bonding is so strong. It can really connect eye to eye. So how many kids do you have? 16 to 10 kids. Really? Such a big gang. People, once my friend came to me, he was sitting with me. He like, so your dogs? Look at the dogs, they are my kids. Better change your word next time. रोज योगासन करता हूँ, कविता बोलता हूँ, कहानी बोलता हूँ, गाने गाता हूँ, मस्त बिजी रहता हूँ दिन में. एक और कविता मैं आपको सुनाता हूँ जिसे हरिवंश राय बच्चन जी ने लिखा है. अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, वृक्ष हो भले खड़े, हो घने हो बड़े, एक पत्र छाओ भी मांग मत मांग मत मांग मत. अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, तू न थकेगा कभी, तू न रुकेगा कभी, तू न झुकेगा कभी. कशपथ कशपथ कशपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ. ये महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है, आश्रु स्वेद रक्त से लथपथ लथपथ लथपथ. अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ. I am love animal. उसको पहले डर लगता था, लेकिन फिर जब ये शूटिंग के दौरान कुत्तों से सब ऐसे दोस्ती हो गई कि बहुत अच्छे लगते हैं अभी उसको. अभी ऐसा कहता है कि अभी हमें चाहिए कुत्ता जी चाहिए, कुत्ता जी चाहिए, ऐसे बोलते हैं. I love to know about the brand of the car, the model, the style, and the way of functioning is amazing. So have you tried your hands on your own car's mechanism? I have no license. I would just sit on the driver's seat and just enjoy the feel. एक 1.5 घंटा में प्ले स्टेशन खेल के काइंड्स ऑफ de-stresses me at that point of time. Gym as well as playing games on my PlayStation. In fact मैंने अभी as a bonus मैंने अपने आप को PlayStation 5 गिफ्ट किया था. बच्चों को या इंडिविजुअल्स को ना मोस्ट ऑफ द टाइम्स बहुत सेंसिटिव इश्यूज रहते हैं, लाइक जैसे लाइट्स इन योर केस या साउंड लाइट्स जो भी है. तो हाउ डिड यू टेक केयर ऑफ ऑल दैट? So we got to know that they can't handle this harsh sunlights. So that was very difficult for everyone, like especially for me as a cinematographer, because I can't put any harsh light on them. I can't hit any harsh light. It has to be normal. They should feel cold. The Light and Light, who was the light vendor, they made some special light for this film. Guddu gets into the water for the first time. So I know that you've made some special planning for that, but when the whole thing... That was our little Disney moment.
I was really stressed about that location because एक तो that was an entire set. So for me the stress was about the water because any place that you create, so we were thinking how to make that tank because पानी का pressure बहुत होता है. When you have water in a stagnant position, it has more power than anything else if the structure around it is not solid or not correct. So we were, even after we started putting up set, I was damn stressed about if they enter, pressure increases and the walls give away. After the tank, first we thought we'll just make a tank of bricks because there was a platform, and generally structurally if you create a wall has to go few feet down in the ground, and that was not possible there because it was a studio floor and we had created a platform. We created a tank out of brick and then we added a metal box inside which you don't see because we then covered it with flex was there, and then we textured it with cement and then we gave cushioning on the top because retaining the water is very important. Brick से अगर थोड़ा सा भी इधर उधर pouring हो गया पानी का बाहर, so that was all the stress, but that finally it happened well. We had to also make sure that nobody falls sick, nobody actually falls down. So the kind of flooring also that we used was a cement flooring, कोटा flooring that we call it. तो rough रहेगा. It was a rough flooring. डायरेक्टर को आप पसंद आते हो जब आप कुछ तो एक चीज करते हो which is for everything. जहाँ पे showers थे ना वहाँ पे एक ऐसा step down किया हुआ था. Again 2-3 days before I realized कि यार ये चलेंगे और अगर पैर अटक गया तो they will fall on their face. So that is something which we were thinking क्या होना चाहिए. Then we just created a slope to it. So what happened is you had a level difference, but at the same time there was no chance of them falling down. That is something which actually made him say whatever he actually keeps on saying that in all his interviews. No, that's true because taking care of these tiny things also matter. We just explored markets across Delhi and we went to Delhi to source it because we wanted to have the local flavor. We made a lot of stuff. We spoke to the parents. That was one important thing. We discussed a lot of things with the parents because the parents were the best guides to understanding them. Obviously, we spoke to them, so they had their own inputs because finally the parents couldn't tell them what, like if the shoe was fitting or no. I mean, they would tell us कि उसको ऐसे शूज अच्छे लगते हैं या इस तरह के शूज वो जनरली पहनते हैं, पर ये जो हमने दिए है वो कंफर्टेबल है कि नहीं, is what something would only the sitares would tell us, and they were very open about it. And who was your go-to person on the set? Go-to person? Yeah. Pavan? Yes. I'm not feeling well. I was feeling dizzy. Oh. Well, I don't know what happened. And I was sat on the chair and I was like this. He saw me and he came running to me and he made me feel better. That was one of the things I liked about him. Very caring, very caring. यहाँ से मुझे दिख रहा होता था okay, which champ, where is sitting, what is happening with them and all. So Prasanna sir told me like one day कि your thing is just look around them. जो भी करना है उनको देखते रहना है कहाँ पर क्या है. They are your responsibility. I said okay. Then I became their responsibility. आपने स्पेशली एबल्ड लोगों के लिए और क्या डिटेल में स्टडी किया? कई सारी किताबें पढ़ी, लोगों से मिले, परिवारों से मिले. For our title, what is that uniqueness with disability moment you had during this process? सबसे अच्छी बात है कि एक जजमेंट होता है ना इंसान का कि हम हर किसी को कि ये ऐसा है या वो ऐसा है, वो सारी चीज़ें खत्म हो जाती क्योंकि सब यूनिक है, सब अपने आप में अलग हैं और यही इसकी प्योरिटी है, यही इसकी सुंदरता है कि एक पेड़ दूसरे पेड़ से अलग है, एक जानवर दूसरे जानवर से अलग है, एक इंसान दूसरे इंसान से अलग है, सब लोग अलग हैं, यही है, यही रियलिटी है. हम लोग नहीं कि इसके अंदर वो चीज़ कम है या इसके अंदर वो ज़्यादा है. वो जो कॉम्पिटिशन वाला जो एक सीनारियो है ना, वो आई थिंक यहाँ मैंने आकर और ज़्यादा क्लोजली समझा है. उनका एबिलिटी ये दे नो विदाउट कंडीशन हाउ टू लव. आई लर्न दैट थिंग कि जस्ट डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम एनीवन, जस्ट गिव द लव. ये बहुत सुनने में ऐसा लग रहा होगा लेकिन ये सच्चाई है. How much do you miss that? I don't miss them because I am with them all. But I miss the time spending with them every, like 12 hours, 14 hours every day. So I miss that time. Like we used to have fun, lot of banters with them. गोपी के साथ में मैं ऐसे डांट रहा होता, गोपी मुझे डांट रहा होता, मैं गोपी को डांट रहा होता था. So ऐसे काफी सारी चीज़ होती. हाँ, I'm missing those things. On the day of the premiere, I saw them all dressed up in Abujani and Sandeep ko, and it was such a beautiful moment. Like everybody dressed to the T and everybody enjoying themselves, and
they were the stars of that evening and they were made to feel like stars. So for me, that was the defining moment. Deserving stars that they were, be looking like stars is what for me, to be honest, was the best moment. इसमें एक्चुअली कोई एक पल डिस्क्राइब करना बड़ा मुश्किल है. मैं आपको बता रहा हूँ, जिस दिन से हम लोग इस प्रोजेक्ट पे काम शुरू किया है, प्रसन्ना ने जब से मुझे कहा कि आप भाई शुरू कर काम इस पे, तब से लेकर अब तक जो इतनी लंबी जर्नी रही है, एवरी सिंगल मोमेंट हैज बीन सो ओवरवेलमिंग, लाइफ ऑल्टरिंग ऐसा शब्द है जिसे हम कई बार यूं ही यूज कर देते हैं, अरे ये भी लाइफ ऑल्टरिंग, पर दिस एंटायर जर्नी वाज रियली लाइफ ऑल्टरिंग. किसी ना किसी उसमें हम सब के मन थोड़े से तो बदले हैं और आई वुड लाइक टू बिलीव कि पहले से बेहतर इंसान बने हैं हम सब इस फिल्म का पार्ट होने के बाद. And Sharma ji is gesture to me of every day coming and either pranam करेगा दादाजी, how are you uncle, and immediately side में अगर ये है या any other younger person, like how are you beautiful, really? what's happening. मेरे साथ वो हमेशा वो मुझे हमेशा याद रहता है. You need to have a unique quality within you, or you develop a unique quality within you to train people with special needs. Everyone is unique. Now that uniqueness that they have is a little tricky because not everyone can do what you want them to do. Not everyone can score a basket from a distance. Not everyone can throw a pass from a distance. Not everyone can dribble the ball perfectly well because their hand-eye coordination is a little odd. In that, you need to create a move. So you need to select the right players, right characters in that move to make it successful. How the entire crew was sensitized towards each other. I will always remember, I think miss henceforth. Because one particular day I remember, which I had never realized before during the shoots, when Sitares used to, from the shoot location, they used to go back to the base where they would go rest in their vanities and all. So they would walk out of the set and you always have security dadas on the security guys on the set. Then you always have spot boys on the set. There used to be one person paging from the shoot base saying that Sitare walking to the base, and there used to be one guy actually receiving them, making sure that they are going back to their vanities safely and they are being safe. I've never seen any spot boys, any of our team members misbehaving with them. I will really miss how the entire crew was sensitized and very empathized towards each other. Because what happens is the kind of work we do would really tend to get harsh and rude towards each other and towards yourself also. You really forget to be kind, you forget to be nice to each other and just smile at each other in the middle of the work. That I will miss. So more than a moment, that is something, that is my takeaway from this entire shoot, that how everybody was working towards this one cause, I would say. The last song, they was dancing and one of Steadicam operator, like his name is Shivan. So during the shot, he is one of the best Steadicam operator. He is framing and all going off. So I thought कि यार Shivan ऐसा कैसा कर रहे हैं? So and I'm giving instructions in the talk back and all. He is not listening. So I went to the camera. I saw basically his eyes is filled with tears. So he can't see the monitor. He can't see the frame because he is holding the camera Steadicam. No. So he can't wipe his eyes also. Those kind of moments like very emotional during the shoot. Please do like, share, subscribe and comment on this channel. Uniqueness with disability.